students. I'm your host Gautam, and in this video, we have Revant with us. So Revant is an IIT Gandhinagar final year chemical engineering student. So we will understand from his perspective what does it take to be a chemical engineer, and what are the perspective, career aspects, and all in being a chemical engineer. So thank you, Revant, for joining. Yeah, hello. Hey Gautam. It's a total pleasure to be a part of this interview, and I look forward to having a great time. So the very first question, Revant, जो मुझे पूछना है कि why did you choose the chemical engineering branch? Tell a bit about जोसा की time पे मतलब how was your journey, or why you choose IIT Gandhinagar and chemical engineering? So as usual, जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है स्टूडेंट्स में, मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा था कि आई एम फ्रॉम अहमदाबाद, तो मुझे ऐसा था Right. कि मैं जाऊंगा तो मैं टॉप 7 आईआईटीज में जाऊंगा, मतलब वो जो भी ओल्ड 7 आईआईटीज है। वरना फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर अगर टॉप 7 में नहीं मिल रहा तो फिर तो फिर गुजरात के बाहर जाने का कोई सेंस नहीं है। एंड दैट्स व्हाई मैंने सोचा, फिर मेरे घर से नजदीक है गांधीनगर, इसलिए आई जस्ट केम हियर एंड केमिकल वाज द ब्रांच which was available to me. So Okay. that was my story, to be to be really honest. Okay, got it. So रेवन, मतलब what is exactly chemical engineering? मतलब क्या पढ़ते हैं हम लोग? क्या वो केमिस्ट्री वापस से वो आ जाएगा फिर से, और इज इट समथिंग एल्स? मतलब टेल अ बिट कि हम लोग 4 साल के जर्नी में क्या क्या पढ़ाई होती है. Yeah, sure, sure. So, just to be sure, just to clarify, chemical engineering is not at all chemistry. मतलब केमिस्ट्री राइट. कहीं भी शायद एक कोर्स हमने केमिस्ट्री का पढ़ा हुआ है, बट वो कोर्स भी मतलब दैट्स कॉमन फॉर एवरी ब्रांच। मतलब सीएस वाले भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब के केमिकल वालों को कुछ अलग ही केमिस्ट्री पढ़ानी होती है। नो, केमिकल इंजीनियरिंग इज नॉट एट ऑल केमिस्ट्री। केमिकल इंजीनियरिंग मोर और लेस is more about processes. मैं ऐसा बोलूंगा कि more of industrial processes, to be really specific. And the thing is that it is one of the most ubiquitous branch out there. मतलब even if you look around, मतलब there won't there मतलब there is not even a single product around you which does not require some kind of chemical engineering. Like you can, like if I just look Maybe the around, detergents and those shampoos and all of. yeah, Right. yeah, anything which requires which requires manufacturing at an industrial level, you require chemical engineering. Like chemical engineering in the very basic terms, मतलब जब chemistry क्या होता है, chemistry lab scale पे होता है कि Right. मतलब के यू के रिएक्शन हो रहा है, छोटे लेवल पे होता है वो रिएक्शन। तो मतलब बट जब वो रिएक्शन हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाना होता है तो बहुत सारे अलग फैक्टर्स आ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें फिर वो जो भी केमिकल रिएक्टर्स होते हैं वो सब की डिजाइनिंग डिजाइनिंग होती है। तुम्हें प्रोसेसेस डिजाइन करने पड़ते हैं, किस मतलब प्रोसेस डिजाइन कर लिए कैसे ऑपरेट होंगे, उसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उसे कंट्रोल कैसे करना है। तो दैट इज व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग इज। तो केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसा बोलूंगा, इट्स मोर ऑफ प्रोसेस सिस्टम्स इंजीनियरिंग रादर देन जस्ट केमिस्ट्री और एनीथिंग लाइक दैट। सो Okay. दैट्स व्हाई आई विल से आजू बाजू कुछ भी हो, मतलब इवन लाइक अभी मैं रिसेंटली बोलूंगा कि मतलब जैसे सेमीकंडक्टर्स है, तो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट समवन टोल्ड मी कि इंटेल हायर्स मोर केमिकल इंजीनियर्स रादर देन कंप्यूटर साइंटिस्ट और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। सो मतलब दैट्स व्हाट द मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इंजीनियर्स इज। Okay, so very interesting. मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स थिंक कि केमिकल मतलब अगेन वही केमिस्ट्री आ जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑल, बट आई थिंक इट्स मोर देन दैट. सो या नहीं, रियल. अरे वो बेसिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जो आती है, बट वो केमिस्ट्री के साथ मैं क्या करूं, मतलब उसको मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। मतलब उसके मैं इंडस्ट्रियल मतलब जैसे मुझे कि अगर इंडस्ट्री लेवल पे मुझे अगर सीमेंट मैन्युफैक्चर करना है या फिर मतलब मुझे H2SO4 मैन्युफैक्चर करना है, तो मतलब मैं कौन सी प्रोसेस यूज करूँ, उसको मैं मतलब कैसे यूज करूँ कि ताकि मेरी इकोनॉमिक्स भी मेरी एकदम प्रॉपरली आए, कि मतलब सही. मैं प्रॉफिट भी बना पाऊँ। मतलब वो दैट इज व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग इज। गॉट इट. सो अ लिटिल बिट अबाउट द कोर्सेस, रेवन, मतलब किस टाइप के कोर्सेस, सब्जेक्ट्स नेम क्या रहते हैं जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं बीइंग इन केमिकल इंजीनियरिंग? या सो जो बेसिक इंस्टीट्यूट लेवल पे कोर्सेज तो होते ही है, वो तो नॉर्मली होते हैं। बट मैं यहाँ पे अपने डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज की जैसे मैं बात करूँ,
तो बेसिकली तुम थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक सॉलिड्स पढ़ते हो। एंड मतलब ये बेसिकली 11th 12th में जो पढ़ते हो उसी पे थोड़ा बहुत बिल्डअप होता है, बट 11th 12th वाला इज वेरी, मैं क्या बोलूँ, रूडिमेंटरी। फाउंडेशन। एंड मतलब जिसे अधूरा ज्ञान बोलते हैं। एंड यू स्टार्ट लर्निंग these subjects, then you मतलब gradually you learn something called as material and energy balances. This is basically the most important course, most fundamental course in any chemical engineering curriculum. And धीरे धीरे you build up on it. There are courses like chemical reaction engineering, where you basically learn how to design chemical reactors. Then you learn separation processes, you learn process control, you learn chemical process synthesis and design. So these are basically the courses which are there in a Okay. typical chemical engineering curriculum. Got it, got it. So I think we have talked a lot on academics part. Can you tell a bit about कि जैसे it's chemical engineering is all about industry, industrial processes and all. So किस किस टाइप की जॉब Hmm. रोल्स अवेलेबल है मार्केट में, मतलब व्हाट्स आर डेजिग्नेशन एंड किस किस टाइप की कंपनीज में स्टूडेंट कैन गेट इनटू आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग his or her degree. सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, मतलब आज से 20-25 years पहले ऐसा था कि केमिकल इंजीनियरिंग मेंट दैट अब दैट पर्सन विल गो इनटू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। कि मतलब Okay, पेट्रोलियम, क्योंकि बहुत पैसा था, बिकॉज पेट्रोलियम में बहुत पैसा था उस टाइम पे, मतलब पेट्रोल का बूम था, तो इस वजह से ऑल केमिकल इंजीनियर्स यूज्ड टू गो इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। फिर अभी का एक ट्रेंड मैंने बहुत टाइम से नोटिस किया है कि मतलब केमिकल इंजीनियर्स प्रेफर टू गो इन, मतलब वो लोग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। कि मतलब okay, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब मैं इन डिमांड रोल फॉर एनी केमिकल इंजीनियर, बट नॉट इन इंडिया, इन यूएस। इंडिया okay. में आईआईटीज में मैंने देखा हुआ है कि मतलब द बेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग कोर जॉब्स आर ऑफर्ड बाय दीज एफएमसीजी कंपनीज। तो Okay. एफएमसीजी कंपनीज जैसे आईटीसी है, एचयूएल है, ये सब कंपनीज के सबसे बेस्ट रोल्स अवेलेबल होते हैं। रोल के स्पेसिफिक्स के बारे में मतलब वो दैट इज अ मिक्स ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रोल्स। कि मतलब जैसे आईटीसी के बारे में मुझे पता है कि मतलब हियर a senior of mine interned at ITC, and he used to work in the cigarettes division of Mm-hmm. ITC. And cigarettes में ऐसा था कि मतलब he had to his project was basically कि मैं सिगरेट पीने का एक्सपीरियंस कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ। तो Okay. वो दैट वाज द प्रोजेक्ट, लाइक हाँ, तो मतलब दिस इज द काइंड, मतलब दिस इज आल्सो द काइंड ऑफ रोल व्हिच अ केमिकल इंजीनियर हैज। अच्छा, तो got मतलब it. हाँ, हाँ, उसके अलावा कोर रोल्स भी होते हैं कि मतलब कोर केमिकल इंजीनियरिंग कंपनीज है कि कोर मतलब कोर केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। तो जैसे यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज है, जॉय Aarti केमिकल्स है, Industries. Mm-hmm. या तो यहाँ पे वो लोग आते हैं प्लेसमेंट के लिए, बट वो बेसिक रोल्स होते हैं प्रोसेस कंट्रोल के, प्रोसेस वो वहाँ जाके होते हैं ये रोल्स। मतलब जस्ट टू सम अप, एक तो रोल्स हो गए जो कोर केमिकल प्रोसेसेस, जो इंडस्ट्रीज है जो केमिकल्स बना रही है, मे बी एनी अल्कोहल और हम्म। एनी फिनॉल टाइप प्रोसेस, मतलब केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एंड दूसरे हो गए एफएमसीजी कंपनी। एफएमसीजी कंपनी मतलब कंपनीज लाइक डेटॉल, लाइफ बॉय, हेड एंड शोल्डर्स, आई थिंक या दीज पेंट इन दीज कंपनीज, जैसा एफएमसीजी हम्म कम इनटू, राइट? सो ऐसे कंपनीज में भी हम जा सकते हैं। ओके ओके, सो मतलब काफी या डाइवर्स है। एंड हाउ अबाउट ओएनजीसी, मतलब ओएनजीसी जैसी कंपनीज है जिसमें दिस पेट्रोल माइनिंग, तो वो तो ऑलरेडी एनीवे इट्स अवेलेबल, राइट? गॉट पेट्रोलियम इट। एंड ऑल में तो मतलब इट वाज अ मिक्स ऑफ केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली। कि ओके। मतलब जैसे मतलब कि मैं, अगर पेट्रोलियम रिफाइनिंग हम लोगों ने सबने 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक पढ़ा होता है कि मतलब एक तो यस। साइंस में जाता है कि मतलब एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है कि मतलब उसमें इसमें पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, ऐसा होता है, तो मतलब दैट इज राइट राइट। जस्ट वन एग्जांपल ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। फिर तो ऐसे उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, तो वो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग का काम होता है इन अ पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बट दैट्स आई थिंक दैट्स द पर्पस ऑफ द वीडियो। गॉट इट, एंड सो आई मैंने एक थिंक। और भी बोला मतलब, हाँ, बट न्यू स्ट्रीम्स आर इमर्जिंग अलॉट एंड सेमीकंडक्टर्स इज वन ऑफ देम। तो मतलब क्या होता है, जैसे अभी जो भी चिप्स होती है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स, तो उसमें क्या होता है, जो भी सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स प्रिंट होते हैं उस पे, तो उसमें फोटोलिथोग्राफी से प्रिंट प्रिंट होते हैं।
तो बट वो प्रिंट होने के बाद पहले, बट वो सिलिकॉन को उस स्ट्रक्चर में तो लाना पड़ेगा ना, कि वो जैसे वेफर्स होते हैं, तो वो काम लाने का एक केमिकल इंजीनियर या फिर एक मटेरियल साइंटिस्ट का काम है कि वो कैसे लाए. तो दिस इज व्हाट केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली इज. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. लिटिल बिट टेल अबाउट कि मतलब जैसे अभी आईआईटीज न्यू जनरेशन आईआईटीज लाइक आईआईटी गांधीनगर, तो हाउ इज द प्लेसमेंट सीन? मतलब क्या सारे स्टूडेंट्स कोर एंड केमिकल इंजीनियर्स में ही जा रहे हैं या नॉन कोर में जा रहे हैं, और कैसा प्लेसमेंट का क्या सीन रहा है अभी आजकल? I think it is fairly diverse. कि मतलब I think a student is free to do anything he wants to do here. In my chemical engineering batch, the scenario is pretty diverse. There are people who want to go for higher studies, who want to get into core chemical engineering research. Well, they want to do PhD, or they at least want to do an MS. There are also people who are trying to, who have got into software development, and Okay. even there are also people who have got into machine learning and all. They will completely shifted that field. There are some people like me who have also got into, who have got into some other non-core roles such as finance and something, finance consulting. ओके. सो रेवंत, हाउ इजी इट इज इन बीइंग इन आईआईटीज कि हम केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं लेकिन हम अपना डोमेन स्विच कर ले रहे हैं, तो मतलब हाउ आईआईटी सपोर्ट यू इन दीज थिंग्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ बाकी कॉलेजेस में इफ यू सी नहीं होता है, मतलब आपने इस ब्रांच को Hmm. ज्वाइन किया, आपको वही पढ़ना पड़ेगा, उसी से ग्रेजुएशन लेते हैं, उसमें जॉब लगती है. बट द ट्रेंड इज Hmm. चेंजिंग आफ्टर पोस्ट कोरोना. पीपल आर स्विचिंग रोल्स. आईआईटीज में काफी होता है, लोगों को इंटरेस्ट अपना डेवलप हो जाता है किसी और डोमेन में, तो कैसे आईआईटीज कैसे हेल्प करती हैं चीजों में? So IITs in general, I don't think so would help you. मतलब ये जो भी करना पड़ता है वो खुद से ही करना पड़ता है, वो खुद के मोटिवेशन से ही मेरे ख्याल से आता है. एंड मतलब इफ यू वांट टू, मतलब आई थिंक इट कम्स वेरी नेचुरली कि इफ यू वांट टू, मतलब इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग समथिंग, देन ऑफ कोर्स यू विल एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, नो कि देन कि हाँ यार इसमें मजा नहीं आ रहा तो कुछ और करते हैं, इसमें राइट. ज्यादा मजा आता है. But the thing is that chemical engineering is the perfect branch if you want to explore something else, because it is a general perception, and I would say it is true to some extent that chemical engineering is in general the most chillest of all the branches across all the IITs, I would say, ओके. because कोई भी ले लो, इलेक्ट्रिकल वाले तो मतलब दम निकल जाता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, उन सब में बहुत बहुत मेहनत होती है. इवन सीएस में भी खुद से बहुत मेहनत करनी पड़ती है. बट केमिकल में इतना नहीं होता. केमिकल में इन जनरल इट्स कंसिडर्ड टू बी अ बिट लाइटर देन अदर ब्रांचेस. ओके. सो गॉट इट. इस वजह से इफ यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग एल्स, देन आई वुड से केमिकल इंजीनियरिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच. ओके. गॉट इट. सो इट्स अगेन पर्सन टू पर्सन, मतलब उसको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसके सब्जेक्ट इजी है, उसको टफ भी लग सकता है, राइट? ठीक है, या. ठीक. गॉट इट. A little bit about internship. मतलब if you are aware कि generally people do internship before graduation. So as you said, you have done an internship in finance. So tell a bit about your internship. कि finance में how was that motivation came कि मुझे finance में जाना है, और किस किस type की internships? I was seeing your profile. I've noticed you work in multiple companies, multiple startups. So how was या. that journey? So the thing is that मैं अपने सेकेंड ईयर में था, तो आई वाज इनटू कोर केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च. मैंने काफी यहाँ पे कोर, मतलब आई आल्सो वर्कड विद सम प्रोफेसर्स. इवन मैं अपने सेकेंड ईयर के इंटर्न में आई ऑल्सो, मतलब मैंने फुल टाइम रिसर्च भी किया था यहाँ पे आईआईटी गांधीनगर में. एक एसआरआईपी करके प्रोग्राम है, समर रिसर्च Okay. इंटर्नशिप प्रोग्राम. आई वाज अ पार्ट ऑफ इट. आई वाज वर्किंग ऑन अ कोर केमिकल इंजीनियरिंग रिसर्च प्रॉब्लम. But the thing is that while working on it, I just realized that this was not something which I would like to do after 10 years of my life. मतलब, after maybe, मतलब even after graduation, this is not what I would like to do. तो ये रियलाइजेशन था. एंड मैं इन जनरल थोड़ा सा इकोनॉमी, मतलब थोड़ा सा न्यूज़पेपर्स एंड ऑल जस्ट फॉलो करता रहता था. तो in general, I don't know why, but I was exploring a bit of data analytics and all, and somehow I came across finance. कि somehow, Okay. मतलब it was just very serendipitous, and it just came across, and it just made sense for me. कि okay, it's better कि if I just focus full time on finance, and that's how I कि that's how that. And at the same time, I read some of the blogs by some students from IIT Roorkee. So I was just say searching कि मतलब
yeah, how to get into finance from an IIT or something like that. Because being an engineer, how can I how can I shift my field and all? So I came across some blogs which mentioned that people had done this, had done this exact same thing, and had gotten an internship through cold mailing. So, Okay. so that was the tipping point for me. Okay, if those guys can do, then why can't I? So that was it for me. And so then I decided, okay, I will completely, as a full time, focus on finance only, and I will study finance. So that's what I did for my entire third year. And for internship, I was so for my third year internship, the which I did at the end of my third year, so I was cold mailing startups. So I wanted to work at a startup in a startup environment, and I was mailing. I just cold mailed a bunch of people, a lot of people to be honest, and one of them, fortunately, Okay. like by God's grace, just agreed to give me an essay, just agreed to give me an internship. Okay, got it. So I think one message that goes to the students is once you come into IIT, आपका जो भी branch हो, you can explore a little bit in initial years. आपको जिसमें भी interest है, you can easily switch. So I think that's how I think a college life helps a lot. So irrespective of person, कोई भी branch में join करे, उसके पास Hmm. opportunities I think काफी diverse है. So I think that's what I'm learning and coming. It's coming from your hearing your experience, Revant. Yeah, so this is one thing which I also tell my juniors here. Okay, see, Mm-hmm. it's important and also essential that you explore a bit, but ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ करने में कुछ भी ना हो. Right. कि अगर एक्सप्लोर कर रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग में श्योर रख के एक्सप्लोर करो कि नहीं, मैं डेफिनेटली मैं कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कि सीरियसली एक्सप्लोर करो, कि एक्सप्लोर भी कोई डेफिनेट पर्पस के साथ करो. हवा में कुछ भी कर रहे हो वो मत करो, कि मतलब दैट्स व्हाट आई इवन टेल माय सम ऑफ माय जूनियर्स. Got it. Got it. So I think we talked a lot on placements, academics, and all. Little bit of non-academics. जैसे IIT गांधीनगर is a new generation IIT. So what do you think कि एक नया IIT है तो नया brand है, नई opportunity. How it is unique and different from the rest of the old IITs. मतलब what do you feel कि 4 साल का journey कैसा मतलब IIT गांधीनगर का? So I will tell you कि मतलब I had also asked the same question to some professor here, and I think he has given me the best answer till now. Till now, Okay. मतलब मैंने पूछा कि मतलब working at an old IIT is like working at a मतलब studying at an old IIT, or even or from a professor's perspective, working at an older IIT is like working in a well-established company. And Okay. while working at a newer IIT is like working at a startup. Okay, here everything is new. There are True. no baggages of any sort of. We are completely free to do what we feel is the correct way to do things. I know that of course, since we are a new IIT, connections कम है, and placements भी Mm-hmm. मतलब उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है. But the thing is that somewhere it has to start, no? Okay, matlab somewhere True. that okay, that thrill is also there. Okay, okay, we since we are doing something new, we also have the opportunity to do it more correctly, and we will also have the opportunity to learn from the mistakes of the older IITs. So my IIT Gandhinagar experience has been that matlab it's completely uh, free from any kind of bondages. Like for example, we have, like I say, no restrictions of any sort of like hostel timings. Anyone can go to any person's room at any point of time, and no one will say anything. So there are no ऐसे क्या बोले के लॉक टाइम्स के, ओके इसके बाद तुम हॉस्टल में नहीं आ सकते एक्सेट्रा. So this is just one Mm-hmm. of the example कि मतलब Okay. तो ऐसा भी है कि मतलब सो ओल्डर आईडीज के प्रोज एंड कॉन्स हैं, न्यूअर आईडी के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं. Okay. Got it. Got it. Even the girls are allowed. Yeah, Like yeah, okay, okay. yeah, So I think in older IITs there are restrictions for girls a bit actually. Okay, got yeah. it. ठीक है, got it. And if you see अभी क्या हो रहा है ना कि in the trend of high CTCs, मतलब 20 लाख का पैकेज, 40 लाख का पैकेज, 1 करोड़ का पैकेज के चक्कर में स्टूडेंट्स आर गेटिंग more attracted towards this thing और वो कोई
सीएससी ऐसे कोई ब्रांचेस पिक कर रहे हैं जो कि उनका इंटरेस्ट अगर नहीं भी है तो भी। तो व्हाट इज द हम्म। मैसेज फ्रॉम योर साइड कि स्टूडेंट्स अपना कोर इंटरेस्ट जब जोसा काउंसलिंग भर रहे हो तो कैसे चूज करें कि यार मुझे यही ब्रांच में शायद मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या आ सकता है, तो हाउ दे कैन चूज इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग द पैकेज ओनली? सो द थिंग इज दैट मतलब जोसा के बाद किसी को अपना पैशन पता होना बहुत रेयर केस है, बिकॉज मतलब लाइक यू डोंट रियली नो कि तुम्हारी ब्रांच में होता क्या है। मैं भी जब आया था तो मैंने भी ये सोच के आया था कि मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं ब्रांच चेंज करूंगा। बट once you actually start learning what electrical engineering is or whatever that branch is, you may even realize that this is not what I want to do. कि I hate। तो ये रियलाइजेशंस भी होते ही है। एंड इवन आई आल्सो नो पीपल के जो कंप्यूटर साइंस में सिंस देयर रैंक वाज रियली गुड, दे गॉट इनटू कंप्यूटर साइंस, बट दे हेटेड कंप्यूटर साइंस। मतलब कि उनकी ऐसे कि मतलब कि आई कुड हैव, मतलब कि मैं कोई और आईआईटी में लोअर ब्रांच में, मतलब मैं कोई और ब्रांच में चले जाता, बट मैं कंप्यूटर साइंस में गलत आ गया हूँ। कि ऐसा भी मैंने लोगों को देखा हुआ है कि पीपल डोंट रियली एंजॉय इट। मतलब बट द थिंग इज दैट you will have to deal with it के मतलब I don't think so कि that वो जो CTC एंड वो सब का जो हाइप है उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोई भी बंदा। बट द थिंग इज दैट the only thing which students can do is that you can talk to more people, you can talk to students के ट्रू। you can talk to actually जो इंडस्ट्री में काम करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है कोई भी फील्ड में। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो कोई आईआईटी मतलब किसी भी आईआईटी में पूछ लो कि मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है, पढ़ते क्या हो, तुम होती क्या है। That is the only idea which you can get by talk, that is that you can talk to more people। but otherwise I feel वो जो मीडिया ने जो हाइप बना के रखा है वो I don't think so can be ignored। राइट राइट, एट द एंड आई थिंक पर्सन का जो कोर इंटरेस्ट है, इफ ही परस्यू, आई थिंक दैट्स वेयर द that he will be happy and maybe success better, right? And yeah one yeah one very common, very most asked questions during counseling जो हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि should I give a preference to the branch or the institute? मैं ब्रांच अच्छा लूं कि मैं इंस्टीट्यूट अच्छा लूं? तो इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक्चुअली? if तुम बहुत ज्यादा श्योर हो कि मुझे यही करना है, मैं बहुत ज्यादा श्योर कि बहुत रिसर्च कर लिया है कि इसके बाद के, तो फिर ब्रांच ले ला। एंड इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ योर ब्रांच देन इंस्टीट्यूट ले लो। Right, right. Good answer. I think one last question from my side will be कि uh, the students who are watching this video, मतलब what is your message to them? कि they will be joining the colleges, lot of colleges of the country, तो how they should plan up their journey की so that they can मतलब maximize, utilize the whole thing. हम्म। I don't think so. I am at a position to give anyone advice, but yeah, I will just tell कि मतलब explore and do things with passion and just work hard. Like, like that's the Got it. only thing I think, I and can what say. is the मतलब you must have friends studying other colleges, तो what is the difference you realize कि IITs में पढ़ना या अच्छे colleges like NITs, IITs में which is something different जो normal tier colleges जो होते हैं cities के tier 3 tier 4 में नहीं मिलता है? Is it like what Hmm. is that thing मतलब that makes these colleges unique? I think the only difference is the peer group which you will make। मतलब तुम्हारे आजू Okay. बाजू में अगर 10 लोग घिस रहे हैं तो हाँ, फिर तुम्हारा भी मन हो ही जाएगा कि मैं भी मेहनत करूं, मैं भी कुछ बनूं। बिकॉज एसेंशियली तुम लोग यहाँ पे पहुंचे हो तो कुछ तो दिमाग है, तभी पहुंचे हो। तो मतलब एंड तुम्हारे आजू बाजू भी सब लोग मेहनत कर रहे होते तो तुम्हारा भी वो मन बन ही जाता है कि मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ बनूं। right. तो आई थिंक द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एनी Good top college. college, Right. any good college between or and any other college is that is the peer group which you will get। and I think this is true for any college, like even IIMs में भी इसके बाद MBA में कोई भी कॉलेज है, ये peer group मतलब is the differentiating factor। Got it. Got it. I think one to sum up in a one line, we can say it's the students or it's the people who make the college and not the other way around. Right. या Got it. या बिकॉज पढ़ाई तो सेम ही है यार। मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि मतलब मैं कुछ यहाँ अलग पे पढ़ा हमें देंगे। कुछ हाँ, कुछ अलग पढ़ा रहे हैं एंड उन्हें कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई तो सेम ही है। Right. बट इट्स मोर ऑफ हु यू स्टडी विथ, हु यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम विथ।
कि तुम टाइम पास कर रहे हो तो टाइम पास भी किसके साथ कर रहे हो, तो वो भी Right. मतलब Got it. Got it. So I yeah. think thank you, Revant. I think we have covered most of the questions, and I think it's give a perspective to the students. So thanks for your time.